All right. So consideration is also another important principle of the seven C's of communication. And consideration, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके सारे जो seven C's हैं वो आपस में interlinked हैं, connected हैं. So अगर आप एक को follow कर रहे हैं, किसी दो को follow कर रहे हैं, तो सारे seven C's में से कुछ ना कुछ एक आध component साथ साथ complete होता जा रहा है. So if you're being courteous, then you're also being considerate. And अगर आप consideration follow करते हैं तो जाहिर सी बात है then you're also being courteous. So consideration, as the word suggests, that you have to be considerate towards the needs and the perspectives of your audience or your clients or your customers. ये audience आपके clients, आपके customers, आपके readers, आपके co-workers, आपके colleagues, कोई भी हो सकता है. So consideration involves empathizing with others and keeping the following in mind while preparing the message: the recipient's viewpoint, mindset, educational level, mood, desires, and needs. So remember that consideration का मतलब है to be considerate, and you have to empathize with, whatever the need or whatever your, audience needs. So आपको जो आपके ऑडियंस, जिस तरह की आपकी ऑडियंस है, जो उनका नजरिया है, ठीक है, जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग कर रहे हैं, उनका माइंडसेट, उनके डिजायर्स के साथ उनकी नीड्स, उनकी प्रेफरेंसेस, अगर वो कोई पॉइंट लेकर आ रहे हैं तो उसको भी कंसीडर करें, उनके मसले मसाइल. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट काउंट्स इन when you focus on consideration. And consideration requires you to not lose your temper or accuse the receiver. Try to apply the you attitude throughout the message as much as possible. So consideration का मतलब ये है कि you have to be patient, you have to be polite, you have to be courteous. आपने goodwill maintain रखनी है as much as possible, and you have to make sure that you're also using you attitude. अब you attitude क्या है? ये एक different approach है, बहुत बेहतरीन approach है, खास तौर पे यूज होती है बिजनेस कम्युनिकेशन में. सो एक तो आपके सामने आई वी एटीट्यूड होता है, मैं और मैं, ठीक है. सो एक बहुत ही ज्यादा ये sender focused या sender centered approach है, that is I or we attitude. And then we have an audience centered approach which is known as you attitude. You attitude बकायदा एक approach है जो इस्तेमाल की जाती है professional communication में. So what are the key points that we need to remember whenever we are trying to follow consideration, whenever we are trying to incorporate consideration in our professional communication? You have to focus on you. That means you have to focus on your audience instead of I and we. ठीक है? Show audience the benefits or interest in the receiver. ठीक है? Show them the benefits they might get. ठीक है? Like whatever things that you can offer, जो भी आप offer करें उससे उनका interest ही develop होना है. You have to emphasize on the positive side rather than on the negative side. चाहे कितनी भी बात बुरी हो, आपने पॉजिटिविटी के ऊपर ही फोकस करना है. एंड यू हैव टू प्रेजेंट फैक्ट्स in the most courteous and in the most pleasant way. ठीक है, ताकि बात पॉजिटिव लगे. जो काम ना भी हो रहा हो ना, वो पॉजिटिवली आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है. And you have to apply integrity, and you have to show some ethics. So एक यहाँ पे एग्जाम्पल है. चलिए ये एग्जाम्पल हम समझते हैं, पहले यू एटीट्यूड समझ लें. सो व्हाट इज यू एटीट्यूड? एज आई टोल्ड यू दैट इट्स एक्चुअली an approach. ठीक है, ये बकायदा एक approach है. So you attitude refers to a style of writing that puts readers' needs first. Specifically, you attitude emphasizes what the reader wants to know, respecting the reader's intelligence and protecting the reader's ego. So you attitude is actually an entire genre of writing, right? It's actually an entire style of writing जिसमें आपने क्या करना है, रीडर्स की नीड्स को, उसकी वांट्स को, उसके डिजायर्स को फर्स्ट पे लेके आना है. ठीक है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर रीडर्स, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर ऑडियंस. और याद रखें कि जितना आप अपनी ऑडियंस को इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी ऑडियंस उतनी ही ज़्यादा आप जो है वो अपने काम में सक्सेसफुल रहेंगे. फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स. अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कस्टमर सर्विस का आपका काम है, आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके लिए आप डिफरेंट ऑफर्स लेके आएंगे, ठीक है, उनको आप डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट बेनिफिट्स बताएंगे अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड के बारे में, तो वो आपकी तरफ आएंगे. ठीक है. सो रिमेंबर के आपने यू एटीट्यूड लिखने में ही नहीं, लेकिन आपने अपनी स्पोकन लैंग्वेज में भी यू एटीट्यूड जो है इनकॉर्पोरेट करना है. और अक्सर आप देखते हैं लोग क्लाइंट डीलिंग में भी इस तरह से करते हैं दैट दे लाइक
the people, they actually give importance to their clients and customers. So अगर आप let's suppose कहीं क्रॉकरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं किसी भी शॉपिंग के लिए, और एक बंदा जिसने आपसे सही से डीलिंग नहीं की, बात नहीं की, आप कभी भी नहीं जाएंगे उसके पास, लेकिन दूसरे बंदे ने, दूसरे शॉपकीपर ने आपसे बहुत अच्छे से डील किया, आपकी सारी जो है नीड्स एंड वांट्स को देखा है कि भाई व्हाट सॉर्ट ऑफ जो भी आपकी विश है कि मुझे ये वाली चीज़ नहीं पसंद तो मुझे वो वाला कलर नहीं पसंद, उसने हर चीज़ देखा, उसके हिसाब से आपको आपकी जो है ना वो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको प्रेजेंट किया। सो आप नेक्स्ट टाइम उसी बंदे के पास जाएंगे खरीदारी करने जो आपकी बात को इंपॉर्टेंस दे रहा है, राइट? सो you attitude is not just applicable in written communication but also in in spoken communication as well. So you have to emphasize what the reader wants or what your audience wants. They can whatever they want to know, and you have to respect their intelligence, you have to respect their preferences. So this is what you attitude is. So abhi main aapko ek example से समझाती हूँ. So just look at the bad example first. इस जो फर्स्ट वाली जो एग्जाम्पल है इसमें आपको आई और वी एटीट्यूड नजर आएगा, ठीक है? आपको सेंडर फोकस एग्जाम्पल आपको नजर आएगी. I would like to express my thanks for your order dated 6th April. We have now executed the order and I would like to draw your attention to our dispatch documents that I have attached to this email. The documents include our invoice, our packing note and our driver delivery note. So यहाँ पे जो pronouns use किए गए हैं वो है I, we, our. राइट? सो इसमें बहुत ज्यादा सेंडर फोकस हुआ हुआ ये मैसेज, ठीक है? इसमें आपने दूसरे बंदे को इंपॉर्टेंस नहीं दी जिसको ये मैसेज जा रहा है, आपने अप्रिशिएट नहीं किया, आपने गुडविल नहीं मेंटेन की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी. नाउ जस्ट सी द गुड एग्जांपल. Thank you for your order dated 6th April. The goods you ordered have now been dispatched. Please find attached the relevant dispatch documents, including invoice, packing note, and driver delivery note. So first of all, they actually appreciated their efforts. उसके बाद बहुत तमीज और बहुत प्रोफेशनली, बहुत courteous अंदाज में इन्होंने जो है वो you attitude या you approach use करते हुए कहा the goods you ordered have now been dispatched, ठीक है? And thank you for your order dated 6 April. यानी यहाँ पे उसी प्रोनाउन को रिप्लेस करके आप यू ऐड कर दें तो आपके मैसेज में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा. Another example, for example, आपके पास I, we, view और you view का जो है दोनों एग्जाम्पल मौजूद हैं. अगर मैं यहाँ पढ़ूँ कि we are requiring all employees to respond to the attached survey about health benefits. So again यहाँ we attitude use हुआ हुआ है, ठीक है? We want all our employees to fill the survey. So again I और we attitude का use है. अब अगर आप you attitude देखें, so because your ideas count, like you're appreciating them, you're trying to make them feel a little important, ठीक है? So because your ideas count, please complete the attached survey about health benefits. So आप देख सकते हैं कि बहुत फर्क है किसी को appreciate और किसी की efforts को acknowledge करने में और you attitude use करने में versus not using the you attitude. एक और एग्जाम्पल आपको नीचे सेंडर फोकस और ऑडियंस फोकस वाले में मिल जाएगी. लेट्स सी के कौन सी वाली ज्यादा. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. All employees are instructed herewith to fill out the enclosed questionnaire so that we can allocate our training funds to employees. So एक तो बहुत ज्यादा bossy है, ठीक है? All employees are instructed here. So बहुत it sounds a little bossy, and then आपने इसमें we और our यानी I और we attitude का use किया है. Whereas if you just compare this with the second, the the second example जो audience focused है वो ये है. By filling out the enclosed questionnaire, you can be one of the first employees to sign up for our training funds. So एक तो यहाँ पे आपने audience focused बात की है, आपने इनको interest show किया है, इनको बताया कि what would be the benefits, ठीक है? तो आपने इनकी desire interest को थोड़ा सा आपने provoke किया यहाँ पे. So you can be the one of the first employees to sign up for our training funds. So एक तरीका ये भी है to appreciate their efforts, to show them some benefits and some interest, and also to change the pronouns and use you.
Emphasize positive. So be considerate towards others and emphasize on positivity as much as possible. जो काम नहीं भी होता उसको भी आप बहुत पॉजिटिवली बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मौजूद हैं. लाइक दिस प्लान डेफिनेटली कैन नॉट सक्सीड इफ वी डोंट obtain management's approval. Now if something is not being done, you can also tell this politely and in the most positive way, और आप उसको change कर सकते हैं by saying, आप rephrase कर लें कि this plan definitely can succeed if we obtain management's approval. ठीक है. और इसके अलावा एक और भी है आपके सामने example, you failed to include your credit card number so we can't mail your order. So instead of using the word failed here या फिर cannot, ठीक है, do not, ऐसे words जो है ना वो एक बहुत ही bad और negative impression देते हैं. Try to change it and make it more make it more positive by just rephrasing it and adding, by eradicating or removing the not from the sentence, the bad words from the sentence, and just make it positive. We look forward to completing your order as soon as we receive your credit card number. ठीक है, आपने बहुत politely और corporate अंदाज में बोल दिया कि we look forward to completing your order as soon as we receive your credit card number. और इसके अलावा भी आपके सामने लास्ट एग्जांपल बहुत अच्छी है. एम्प्लॉयज कैन नॉट पार्क इन लॉट एच until April 1. सो कैन नॉट को आप रिमूव कर दें और इसको आप रिफ्रेस कर दें कि एम्प्लॉयज मे पार्क इन लॉट एच स्टार्टिंग April 1. So emphasizing the positive side is also very important. हर वक्त नेगेटिव ना रहा करें आप भी, और अपने मैसेजेस को भी नेगेटिव ना रखें, बिकॉज अगेन इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द रिसीवर और योर ऑडियंस अगर आपने बात ही नेगेटिवली की है. So consideration का मतलब है that you're being considerate towards the needs of your audience, and then you're being courteous, you're being kind, you're being positive, you're emphasizing on the positive side more, and also to show empathy and using the you approach. Thank you.